अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम 2 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। एक है रिग्रेशन लाइन के ऊपर और दूसरा टॉपिक है हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट के ऊपर। तो वन बाय वन हम इन दोनों टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे बट फर्स्ट डिस्कस करेंगे रिग्रेशन लाइन के ऊपर। सो बेसिकली जब हम रिग्रेशन लाइन की बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिग्रेशन लाइन। One is called simple regression line and the second one is multiple linear regression line. What is the difference between simple linear regression line and multiple linear regression line? In case of simple linear regression line, we have only one independent variable, and in case of multiple linear regression line, we have more than one independent variable. तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब ये एक रिग्रेशन लाइन लिखी हुई है। अब इसमें मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब किसी भी लाइन में 2 वेरिएबल होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर जो लिखा होगा दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे जो लिखा होगा दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इस इक्वेशन के अंदर यू कैन सी दैट वी हैव ओनली वन डिपेंडेंट वेरिएबल बट वी हैव मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इसलिए वी आर कॉलिंग इट एज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लाइन एंड इन दिस लाइन वी हैव ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन है। सो कंक्लूजन इज दैट अगर आपके पास एक आईवी है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। अगर एक से ज़्यादा आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो वो आपके पास मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होगा। अब यहाँ पे बेसिकली हम करते किस लिए हैं कि अगर हमने देखना है कि अगर एक वेरिएबल बढ़ रहा है, एक वेरिएबल में इंक्रीज आ रहा है, सो हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो फॉर एग्जांपल जैसे कि इफ वी वांट टू चेक दैट इफ इनकम इंक्रीजेस then what will be its effect on consumption or on saving? So we want to check that if income increases, what will be its effect on consumption? So or if interest rate increases, what will be its effect on investment? So हम एक वेरिएबल का दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट चेक करना चाह रहे होते हैं, तो उसलिए जो हमारे पास सोल्यूशन होती है और इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कैसे करें, ये रिलेशनशिप कैसे चेक करें, उसके लिए हम एक रिग्रेशन लाइन फिट करते हैं। उस रिग्रेशन लाइन में एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है और बाकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो तो उसको हम कहते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो जाएं तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन लाइन। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड है लीनियर। लीनियर का मतलब ये है कि जितने भी आपके पास आईवी होंगे उनकी पावर 1 होगी। चाहे आप सिंपल लीनियर रिग्रेशन को देखें, आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन को देखें, यहाँ इन सब की पावर 1 है। अगर इनकी पावर 2 हो जाएगी तो वो लीनियर नहीं रहेंगे, वो क्वाड्रेटिक रिग्रेशन लाइन बन जाएगी। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर हम लोगों ने सिर्फ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को ही डिस्कस करना है, तो हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में इनकी पावर 1 लेके चलेंगे और हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल को डिस्कस करेंगे। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के क्वेश्चन हमारे टॉपिक के अंदर नहीं है, तो बस आपको आइडिया देना था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है, एक से ज़्यादा है तो वो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल होंगे। अब बात करते हैं इसमें कुछ और जो नंबर लिखे हुए हैं, जैसे कि ये ए है। सो बेसिकली ए यहाँ पे इंटरसेप्ट को शो कर रहा है, ठीक है। ए यहाँ पे क्या है, इंटरसेप्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी ए क्या है, वो ए आपके पास यहाँ इंटरसेप्ट को शो कर रहा है। अब इंटरसेप्ट होता क्या है बेसिकली, इंटरसेप्ट आपको शो करता है एवरेज वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन ऑल अदर वेरिएबल्स आर जीरो। जैसे कि यहाँ पे अब एक ही वेरिएबल है एक्स, अगर एक्स जीरो हो जाए तो पीछे वैल्यू जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है उसकी वैल्यू ए रह जाएगी। और ये एरर टर्म म्यू, म्यू को बोलते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास म्यू क्या है, एरर टर्म। इसी तरीके से यहाँ पर ये जो म्यू है ये भी आपके पास एरर टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली एरर टर्म से क्या मुराद है, एरर टर्म के अंदर वो तमाम वेरिएबल आ जाते हैं जो हमने अपने मॉडल के अंदर शामिल नहीं किए हुए होते, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मॉडल एक और लिखता हूँ, क्यू डी इज इक्वल टू ए माइनस बी पी। अब यहाँ पे क्यू डी रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी डिमांड को और पी रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइस को। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारे पास यहाँ मैं एरर टर्म भी लिख देता हूँ कि जो डिमांड है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रही है, कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी।
अब क्या रियल लाइफ में ऐसा ही होता है कि आपका जो डिमांड का डिसीजन है, क्या वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे डिपेंड कर रहा होता है? प्राइस के अलावा भी तो बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो हमारी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि फैशन है, टेस्ट है, वेदर है, इनकम है, पॉपुलेशन है। They all are affecting our demand decision, but we are not discussing all of these variables here. So what does it mean? उनको हमने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया हुआ, ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल था, तो वो वेरिएबल जो हमने अपने मॉडल के अंदर इंक्लूड नहीं किए, वो हमारे पास कहाँ पे चले जाएंगे? एरर टर्म के अंदर चले जाएंगे। सो बेसिकली एरर टर्म क्या बता रहा है? एरर टर्म वो वेरिएबल्स बताता है जो आपने मॉडल के अंदर शामिल नहीं किए होते, उनका इफेक्ट एरर टर्म के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पे हमने सिंपल लिखा हुआ है y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड दैट इज ओनली अफेक्टिंग बाय x. There are so many other variables like a, b, c, d. They are also affecting y, but for the time being we have not considering that variable in our model. So the effect of those variable has to be discussed in error term. So यहाँ पे आपको ये दो बातों का आइडिया होना चाहिए। एरर टर्म क्या है? एरर टर्म आपके पास उन वेरिएबल्स का इफेक्ट शो करेगा जो अपने मॉडल में शामिल नहीं किए। ए क्या है? इंटरसेप्ट है, और इंटरसेप्ट क्या शो करता है? एवरेज वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल व्हेन ऑल अदर वेरिएबल्स आर जीरो। इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर वी हैव ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्स, and in this model we have so many independent variables, so that's why we are calling it as multiple linear regression line. And mu is again the array term, a is also the uh, intercept. And what about this b? B is the slope, that how much change in uh, y when x increases or decreases. सो अब हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होंगे, हमने हर क्वेश्चन में ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, और वो फाइंड करके हमने यहाँ पुट करनी है। अब ए की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? ए की वैल्यू को फाइंड करने का फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब y बार ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, x बार भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। y बार इज आल्सो मीन एंड x बार इज आल्सो मीन। y बार is the mean of y values and x bar is the mean of x values. So the formula for y bar will be y bar is equals to sum of y divided by total numbers, and the formula for x bar is summation x divided by total number. So this is how we are going to calculate the value of y bar and x bar. And the next thing is that for the calculation of A, it is necessary that we have the value of B. So this is the formula for the calculation of B. B is equals to n summation xy minus summation x into summation y, then divided by n summation x square minus summation x whole square. So these are the two formulas that are used for the calculation of simple linear regression line. And if we want to discuss multiple linear regression line, then we have to use so many other formulas. But for the time being, we are only going with this option of simple linear regression line. So now let's take a question and we try to solve that, how to calculate the regression line and how to calculate the value of A and B. So keep in mind that in every question of simple linear regression line, we have to find the values of A and B. So we have to keep these two formulas in our mind. So the formula for A is going to be y bar minus bx bar, and formula for the calculation of B is equals to n summation xy minus summation x summation y divided by n summation x square minus summation x whole square. In multiple videos and in different books, you will see that they are using different type of formulas. You can also use these formulas as well, but these are the easiest formulas that I have written here. So it is appropriate that if you are going to memorize these two formulas. So now let's take a question and we try to solve the question with the help of these formulas. So now here you can see that we have two variable. One is price and the other one is quantity. So we have to fit a regression line on these variables. So we have to set one variable y and we have to set one variable x. So price is our x, that is our independent variable, and quantity is our y, that is dependent variable. So according to the information, you have to identify that which one is independent variable and which one is dependent variable. So here
I have decided and identified that the price is going to be my independent variable and quantity is going to be my dependent variable. So why I have considered quantity as dependent variable and price as independent variable? Because whenever we go to the market, so the first thing we ask from the shopkeeper is about price. So after knowing the price, we are going to buy or less. So the first change occur in price, and then after knowing the price, our demand decision will be affected. So price is independent variable and our demand decision is depending on the price. So that's why we are calling quantity demand as our dependent variable. So we have to write the regression line here. So the regression line is y is equals to a plus bx. So we have to fit this regression line here. And as I mentioned earlier that we have to find the values of a and b, then we have to put the values of a and b here. So formula for the calculation for a is equals to y bar minus bx bar. And without the calculation of b, we cannot find the value of a. So we also have to write down the formula of b. So the formula for b is equals to n summation xy minus summation x summation y divided by n summation x square minus summation x whole square. So this is how when we are calculating or fitting the line of y on x. Similarly, we have some question or we have to face some situation that we have to fit a line on x on y. Then this whole scenario will be reversed. So we will discuss it in our later section. So for the calculation of a, we have to sum the value of y then divide by total numbers. Then for x bar, we have to sum the value of x then divide by total numbers. So the formula for y bar is equals to summation y divided by n. So how to get this summation y? हमने क्या करना है, हमने इन सब y को ऐड करना है देन डिवाइड कर देना है टोटल नंबर से. सो जो सम ऑफ y है दैट इज 1024 एंड जो सम ऑफ x है दैट इज 495. सो ये हमारे पास सम ऑफ x आ गया, ये हमारे पास सम ऑफ y आ गया. अब हमने क्या करना है, y बार कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ y जो आया है 1024, इसको हमने डिवाइड करना है टोटल नंबर के साथ और जो हमारे पास टोटल नंबर है वो 10 है. ठीक है, ये हमारे पास y बार आ जाएगा. इसी तरीके से जो नेक्स्ट चीज हमें चाहिए वो x बार चाहिए. तो x बार हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? समीशन x डिवाइडेड बाय n, यानी कि 495 डिवाइडेड बाय 10. तो यहाँ से हमारे पास x बार आ जाएगा. तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. जब हम डिवाइड करेंगे 1024 को 10 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 102.4. ये हमारे पास आ गया y बार 102.4. और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 495 को 10 के साथ, 495 डिवाइडेड बाय 10, 495 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 49.5. सो x बार इज 49.5 एंड y बार इज 102.4. सो ये हमारे पास x बार एंड y बार दोनों वैल्यूज आ गई हैं यहाँ पे. अब हमने देखें y बार यहाँ पुट कर देंगे 102.4, x बार यहाँ पुट कर देंगे 49.5. But still we do not have the value of b. So in order to calculate b, we have to find b by using this formula. So for this we have to make certain columns. So in numerator, first of all we have to multiply each value of x with y. Then we have to multiply it with by total numbers. And here we have already sum of x and sum of y we already here, and in denominator we have to take the square of each value of x. So let's create a here new column
that is x into y. So in this column we have to multiply each value of x with y. First of all we have to multiply 25 with 118, then 45 by 105, then 30 by 112, then 50 by 100. And then we have to create another column where we have to take the square of all the values of x. So we have to take the square of 25, we have to take the square of 45, then we have to square the 30, then we have to take the square of 50, and so on. So when we take the square of all these numbers, so the square for 25 is 625, and the square for 45 is 2025, and the square of 30 is 900, then the square of 50 is 2500, then the square of 35 is 1225, and then 40 square is 1600, then 65 square is 4225, then the square of 75 is 5625, and the square of 70 is 4900, and then the square of 60 is 3600. So we have completed this column. We have to take the square of each value of x. So this will create a new column of x square. हमने क्या किया है, हमने हर x वैल्यू का स्केयर लिया है और यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम क्रिएट हो गया x स्केयर. अब हमने इन सब को ऐड करना है ताकि हमारे पास फार्मूले की ये डिनोमिनेटर वाली चीज़ आ जाए, समीशन x स्केयर. तो जब हम इन सब को ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास x स्केयर आ जाता है 27225. अब हमने ये कॉलम क्रिएट करना है एक्स वाई. अब ये कॉलम हम कैसे क्रिएट करेंगे, एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे वाई के साथ. तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स है 25 और फर्स्ट वैल्यू है वाई की, दैट इज 118. तो 25 को 118 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2950. देन हमने मल्टीप्लाई करना है 45 को 105 के साथ. तो 45 को 105 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4025. देन हमने मल्टीप्लाई करना है 30 को 112 के साथ तो ये आ जाएगा 3360. देन 100 को मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ, सो इट विल गिव अस 5000. देन 111 मल्टीप्लाई बाय 35, it will give us 3885. Then so on 4320, then 6175, then 660, then multiply 91 with 70, so it will give us 6370, and then multiply 96 with 60, it will give us 5760. So after multiplying each value of x with y, then we have to sum all of these values. So it will give us 49145. So we have the calculation of all the required columns here. So now we have to put all these values here. So for the calculation of b, so b is equals to n. So what is n? N is the total number. So total numbers are 10. Then summation xy. So what is the summation xy? That is 49145 minus summation x. So summation x is this 495 then into summation y. So what is summation y? Summation y is 1024. So 1024, then divide by n. So what is n? N is 10. Summation x square. So what is summation x square? Summation x square is 27225 minus summation x whole square. Summation x 495 whole square. So when we solve all this, it will give us the value for b. So when we multiply 10 with 49145, it will give us 491450 minus, then we have to multiply 495 with 1024.
it will give us 506880. Then we have to multiply 10 with 27225. It will give us 272250 minus. Then we have to take the square of 495 and it will give us 245025. So 245025. Then we have to subtract this value from this and it will give us minus 15430. And when we subtract 272250 with this, it will give us 27225. So after dividing this value with this, so the value for B is equals to minus 0.57. So it means that there is a negative relationship between the value of y with x. So this is how we have to calculate the value for B. So as we have the value of B, so now we have to put the value of B here in order to calculate the value for A. So A is equals to y bar. So what was y bar? Y bar was 102.4 minus B. So B is minus 0.57 and the x bar is 49.5. So now we have to multiply this with this. So keep in mind that this minus is the minus that we have calculated for B and this is the minus that we are using in the formula. So keep in mind that we have to use both of these two minus signs. So when we multiply with this, so the final value for A is 130.62. So now we have the value for A and we have the value for B. So at the last we have to put both of the values of A and B in this regression line. So y estimated, so we have to put this hat sign here. Why? Because now we have the values for A and B. So the value for A is 130.62 and the value for B is minus 0.57 then this x. So what is this telling us? This is telling us that there is a negative relationship between the x and y. So our dependent variable was y, that is quantity, and our independent variable is x, that is price. So it means that when price increases, demand decreases. And how much the change is? So when the price increases by 1 unit. So how to interpret this? So the interpretation is that when in price increases by 1 unit, it will decrease the quantity demand by 0.57 units. And this is the value for intercept. So when the price is 0, the maximum or the average value for the demand is 130. So this is how you can calculate and estimate the value for A and B by using this regression line. And here we have used the simple linear regression model. So in case of simple linear regression model, we have only one independent variable and dependent variable in both the cases of multiple linear regression model and simple linear regression model. Dependent variable is only one, but independent variable changes. So in any single equation, we have only one dependent variable, but we have one and more than one independent variable. So if you have any question, please ask me.